Hello and welcome to this Friday weekly webinar. Today to talk about women's health and nutrition, we have with us Dr. Lalita Verma ma'am, who is Associate Professor Food and Nutrition Department, Lady Irwin College, University of Delhi. आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम इस कार्यक्रम में. थैंक यू. आपको मैं ये बता दूं कि आज हमारा 102वां वेबिनार है. ये श्रृंखला जो है 2 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई थी और क्योंकि ये पोषण माह चल रहा है इसीलिए हमने आप जैसी विद्वान वक्ता को यहाँ बुलाया ताकि आप वुमेन्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे हमारे दर्शकों को जानकारी दे सके. आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत मैम. इसके साथ ही we have with us Communication and Documentation Officer of MDNIY, Mohammad Tayyib Alam sir with us. I also welcome you sir. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. As per the tradition of our institute, let us start the program with prayer. Om Sahana Vatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. I once again welcome you ma'am to this webinar on women's health and nutrition. आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है. साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो आज आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को हमारे दर्शकों के बीच रखने का सोचा. आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत. इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे संस्थान के संचार एवं प्रलेखन अधिकारी मोहम्मद तैयब आलम सर का भी और उनसे अनुरोध करूंगी कि कृपया हमारी आज की वक्ता का परिचय प्रस्तुत करें. सर. Thank you, Dr. Vandana. Good evening, everyone. Welcome you all to Murarji Desai Institute of Yoga's 102nd Friday webinar. The month of September is dedicated to Poshan Ahar as part of Poshan Abhiyan, the National Nutrition Mission of Government of India, where in this year's the Poshan Abhiyans revolve around the theme Mahila or Swasth. Murarji Desai Institute of Yoga dedicates its all the September Friday webinar to Mission Poshan, Integrated Nutritional Support Program of Government of India. I'm also happy to share that the institute is bringing a digital booklet of all the earlier 52 Friday webinars. Celebrating the Poshan Pakhwara, today we have with us respected Dr. Lalita Verma ma'am, Associate Professor, Lady Irwin College, University of Delhi, who will speak upon today's topic on women's health and nutrition. Dr. Lalita ma'am's area of interest is public health, nutrition, promotion of good health through primary prevention of nutrition problems in the population at large. Ma'am has published several research papers and book chapters in reputed international journals and presented her work at various conferences, seminars. Ma'am's area of specialization is public health, midday meal, integrated child development services, and maternal nutrition. Dr. Lalita ma'am has been working on various aspects of anthropometry, growth assessment, situational analysis of ICDS, correlation of anthropometric indices, and body fat percent in assessing obesity, malnutrition, midday meal, maternal nutrition, development of nutrition education modules, and prevalence of global acute malnutrition. Thank you, ma'am, for accepting our invitation for a weekly weekly webinar, which is a quite popular event and program for social media friends, students, staff, and faculty of the institute. With these few words, I would like to invite today's esteemed guest, esteemed speaker, Dr. Lalita Verma ma'am, to elaborate on today's topic, women's health and nutrition.
Ma'am. Thank you, sir. Thank you for inviting me for this during the Poshan Maha. First of all, I would like to thank your institution, Morarji Desai National Institute of Yoga, and I would like to thank Ishwar sir for giving me this opportunity, and Dr. Vandana as well, because she has given me this opportunity and called me to accept this. So thank you so much, everyone, and congratulations for your 102 weekly webinar. So it's my honor to take this webinar on this topic, especially during the Poshan Maah. My topic of today's webinar is Mahila Swasthya and Poshan, Women's Health and Nutrition. Why I've chosen this topic? Because this is the theme of 2022 of Poshan Maah. In one of the component is the Mahila Swasthya and the Poshan. So I selected this topic because the Mahila, the woman, is the most vulnerable section. That's why the government is also thinking about this, promoting the nutritional status during the Poshan Maah. Next slide, please. So why women's health? So women's health refers to the branches of the medicines that focuses on the treatment, diagnosis, and the diseases, and it's a condition that affect to the woman's physical and the emotional well-being. They also contribute important factor in the economic growth of the country. In India especially, there are the numerous health issues the women are facing. They are addressing the gender, class of the need, disparity, and that exists in the healthcare and improving the health outcome that contributes to the economic gain through the creation of the quality capital and increased level of the saving of investment. Why the women are the vulnerable section? It is very important to understand because women they play an important role. अगर महिला ही स्वस्थ नहीं होगी तो हम बाकी परिवार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं. So importance of the women's health is very, very important. So why women's area of women is important? Because half of the population of the women in India, in all over the world, half of the population is the woman. The woman health will influence the next generation. If the maternal nutrition is good, then only she would deliver the good child. She is going to be develop a good family. So women's health basically influence, especially she is the responsible for the planning of the whole family in their culture. Women usually have the lower socio-economic status, they are less educated, low empowerment rates, and the less healthcare services. Women have these spatial physiological periods. There are many phases of the life like puberty, prenatal, labor, postpartum, breastfeeding, and the menopause. So these are the phases when the physiological changes takes place, जिसकी वजह से उनकी पोषक तत्वों की मात्रा भी different होती है. So that's why the women are the most vulnerable section. आप पोषण माह के दौरान भी जो सरकार है वो वुमेन पे ही फोकस कर रही है because of all these factors. The health of the women and the girls is a particular concern because many of the society, they are totally disadvantaged and discriminated rooted at the socio-cultural factors. Some of the socio-cultural factors that prevents the women and the girls to be benefited with the quality of health services and the best possible level, including unequal power relationship between the man and the woman. There are the social norms that decreases the education, and then exclusive focuses on the woman's reproductive roles and the potential and acute experience of the physical, sexual, and the emotional violence. And the most important is poverty. Is very, very important barrier that affects on the health outcome, and it applies on the both men as well as women. Poverty, they play an important role, and agar logo ke paas purchasing power nahi hogi, they won't be able to consume a 3 meal in a day, then automatically they are going to be suffer as a malnutrition. And important thing is use of unsafe cooking utensils or the fuels or the method of cooking what they are using. So that's why women's health matters, and it is very important to understand. And where we lie, what is the current situation of the women's health in India? So it's a next slide, please. So what is the current situation of the women's health? So if we look at the current scenario of the woman, the data NFHS, National Family Health Survey, says there is a growth in the risk of anemia, the most severe risk of anemia, especially
In the women section, you can see the comparison of the NFHS4 data, NFHS5. There is an increase in the number of anemia cases, especially in the adolescent girls. So this is a matter of concern that कि हमें anemia के बारे में सोचना चाहिए. क्या क्या उपचार हो सकते हैं अनीमिया से बचाव के लिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी. बट ये सिचुएशन है आज की स्थिति में कि वुमेन्स और द गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स, दे आर फेसिंग द एनीमिया की प्रॉब्लम डे बाय डे. इट इज इंक्रीजिंग. द डेटा शोज दैट. Pre-pandemic outcomes. So the comprehensive and national nutrition survey 2019 shows that even before the pandemic, there was the lower intake of the diet, especially in the adolescents and the pregnant women. And after the post-pandemic situation, it has gone to the worst situation. The dietary diversity has lowered down. The people or these girls and the women, they are not eating proper diet. Not eating just not because of the, they can't eat. There is no affordability. There is no surety or accessibility of consumption of the food pattern. Women's dietary diversity in India is declining by 42%. It's a huge number कि 42% जो महिलाएं हैं वो नहीं खा पा रही हैं. उनका रिडक्शन हुआ है in terms of the dietary diversity. अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, अगर मांस मच्छी खा सकते हैं तो वो खाने चाहिए, लेकिन नहीं खा पा रहे हैं. Reduction in the supply of the nutrition services. In pandemic also we had observed that there was the loss of the distribution of the supplies because of there was no physical contacts and the schools में बच्चे नहीं जा पा रहे थे, मिड डे मील नहीं मिल पाया, IFA tablet distribute नहीं हो पा रही थी properly. So there was impact on the nutritional services to the community. This was compounded by the challenges in providing the nutrition services to out of the school, the adolescent girls, which further increased the vulnerability to the poor nutrition outcomes. So it's a very important that the adolescent girl, they are the crucial period. And this webinar also must be listening as students. They should. It's a matter of concern that all these are the problems. They should think about it because they are the girls are the only. They are going to be mother in the next generation, and it's better कि अगर हम आज को ही उनको गाइड कर दें, काउंसलिंग कर दें कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि आगे के जाके उनको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं हो. Next slide, please. So why do women die? So this data is of WHO. The women die as a result of the complication, especially during the pregnancy and the childbirth. Most of these complications develops during the pregnancy और किसी को पहले से भी ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से ये उसका शिकार हो जाती है. The major complications, the account of nearly 75% of all maternal death. उसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से 75% जो हमारी महिलाएं हैं, जो माता महिलाएं हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती हैं. They die. एक नंबर 1 severe bleeding, second is infection, third is high blood pressure, fourth is आपका complications from the delivery, and the last is the unsafe abortions. So these are some factors जिसकी वजह से WHO says 810 women died every day approximately in all over the world. Next slide, please. Now, in India, if you talk about the maternal death, what are the causes? Number 1, it says that delay in deciding the seek care. हमें कहाँ दिखाना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए, कब दिखाना चाहिए, इसमें सोचने में ही लोग टाइम निकाल देते हैं, जिसकी वजह से the condition goes to the worsen situation और वो उसका उपचार ठीक टाइम पे नहीं करा पाते हैं. Second reason is delay in reaching the appropriate health facilities. जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो नहीं मिल पाती हैं सही तरीके से, ये भी उसका कारण है. थर्ड कारण इज द डिले इन रिसीविंग द क्वालिटी केयर वंस इनसाइड द फैसिलिटी. अगर पहुंच भी गए किसी तरह अस्पताल में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, लेकिन एक क्वालिटी केयर जो मिलनी चाहिए वो अवेलेबिलिटी नहीं है, बिकॉज आवर मेडिकल सेक्टर और द पब्लिक हेल्थ सेक्टर इज नॉट, मैन पावर इज नॉट देयर, or there is no awareness is not there when they should go for the treatment. कहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, कहाँ पे सर्विसेज लेनी है, कौन सी PHC में जाना है, कौन सी आंगनवाड़ी में जाना है, the people, especially these ladies, are not aware about. So these are the some factors. That's why this maternal nutrition is very, very important. Next slide, please.
Now maternal mortality. So maternal mortality is again, it's a matter of concern. It's a very good indicator to identify the status of the woman in the society. The primary cause of death are the hemorrhage, hypertension, infections, and the direct causes may be due to the interaction between the pre-existing medical condition and the pregnancy. The risk of the woman, especially in the lower income group countries like India, the maternal rates causes during her lifetime, it's about 130 times higher compared to the woman living in the developed countries. So maternal mortality is a health indicator that shows very wide gaps between the rich and the poor between the countries, because the high in developed countries, they have the good facilities of health services, while the poor countries, they don't have the good health services in terms of the maternal. Next slide, please. Now the keys factor. So all these data are the WHO. So globally, I'm telling you what is the scenario. In 2017, approximately 810 women die every day from the preventable causes related to the pregnancy and the childbirth. 2002 से 2017 तक maternal mortality ratio, number of maternal deaths per 1 lakh live birth dropped to the 38% worldwide, and the 94% of the all maternal deaths occur in the low and the lower middle income group countries. Young adolescents, especially girls, they face the higher risk of the complications and the death as a result of the pregnancy than the other women. Skilled care before the, during, and the childbirth can save the life of the woman and the newborns. So these are some fact sheet key where we lie, where is the globally we are going in terms of the maternal nutrition. Next slide, please. So now come the paustic ahar. How paustic ahar can play an important role to combat these problems which we saw in the above slides. Next slide, please. Now, nutrients during the pregnancy. As we see, there are the many nutrients which should be given during the pregnancy, especially the energy, protein, carbohydrate, fat. All these are the macronutrients which should be given compared to the normal lady to higher in the proportion into the pregnant ladies. But the main reason of maternal malnutrition and the maternal death is the anemia. Anemia is the main problem. So here I am focusing on the anemia per se, कि why the people, these ladies go to the vulnerable section because of the anemic. So anemia को हटाने के लिए गर्भावस्था में सबसे पहले जरूरी है कि हमें जानना कि हमें क्या चीज खानी चाहिए. सो अनीमिया को भगाने के लिए, अनीमिया को दूर करने के लिए हमें लौह तत्व चीजें खानी चाहिए. लौह तत्व में हम हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, चौलाई की पत्तियां खा सकते हैं, सेजल की फलियां खा सकते हैं, पुदीना खा सकते हैं, मेथी सीड्स खा सकते हैं, मेथी हरी पत्तेदार सीड्स भी पत्ते भी खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं. जितनी भी साबुत दालें हैं, दे आर रिच इन द आयरन. सो हमें अंकुरित करके ये सब चीजें खानी चाहिए, स्पेशली द होल पल्सेस. अब आयरन अगर हम खा लेते हैं, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. ठीक है, सो आयरन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें विटामिन सी भी खाने चाहिए साथ के साथ. व्हाट जनरली द लेडीज डू, और दीज आर बच्चा, द एडोलेसेंट गर्ल्स डू, दे ईट द आयरन रिच फूड, और ऊपर से क्या कर लेती हैं, एक कप चाय पी लेंगी. ठीक है, दे हैव द गुड क्वालिटी ऑफ द पराठास in the morning, then later they drink a tea on it. Sometimes they have the cold drink also. So we don't have to drink all these items. We have to have some vitamin C sources, because vitamin C helps in the absorption of iron. अगर हम आयरन जब भी खा रहे हैं, उसके साथ विटामिन सी खाएंगे, डेफिनेटली हमें अनीमिया नहीं होगा. अगर आप विटामिन सी के सोर्सेज रोज की मात्रा में जितना रिकमेंडेड है आरडीए में, उतना अगर आप खाएंगे तो आपको नहीं प्रॉब्लम होगी अनीमिया की. सो विटामिन सी के स्रोत हमारे क्या हैं, तो हरे पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं उसमें भी विटामिन सी होता है, स्पेशली धनिया पत्ता में होता है, सेजल की फलियों में होता है, खट्टे जितने भी फल हैं हमारे, आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, इस सब में आपको विटामिन सी मिल जाएगा. ग्रीन चिल्ली में जो हमारी हरी मिर्च है, इसमें बहुत विटामिन सी होता है, गुआवा में बहुत विटामिन सी होता है, आंवला में बहुत विटामिन सी होता है. तो हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जब भी हम आयरन की चीजें खा रहे हैं. तभी
उसके बाद ही हम उससे अनीमिया से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अगर आप खाली आयरन खा रहे हो, विटामिन सी नहीं खा रहे हो, तो आपको अनीमिया से मुक्ति नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Dietary diversity. So this topic is very popular in these days, dietary diversity, because this is the most impactful factors that helps to combat the malnutrition, to combat the maternal anemia, to combat the XYZ problems. So dietary diversity होती क्या है? Dietary diversity होती है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को अपनी थाली में रख के खाना, ठीक है। सो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ कैसे होते हैं, जैसे प्रोटीन रिच सोर्सेज हो गए, आपके ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ हो गए, लोह युक्त वाले खाद्य पदार्थ हो गए, आयोडीन को गर्भावस्था में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द आयोडीन बिकॉज इट हेल्प्स इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। तो अगर हम आयोडीन नहीं खाएंगे तो बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। तो आयोडीन, डबल फोर्टिफाइड आयोडीन नमक आजकल अवेलेबल है, जिसमें आयरन भी होता है, आयोडीन भी होता है, वो खाना चाहिए। कैल्शियम रिच सोर्सेज, विटामिन ए रिच सोर्सेज एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7, these are the 7 things we should eat daily in our diet. अगर हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो इनमें से एक एक आइटम हमारे पास होना चाहिए। मिड डे में कुछ खा रहे हैं तब भी होना चाहिए। अपनी थाली खा रहे हैं हम अगर आफ्टरनून में, तो भी हमारे पास इनमें से एक एक चीज होनी चाहिए। सो हर मील में आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज होनी ही चाहिए। प्रोटीन का एक सोर्स होना चाहिए, एनर्जी का एक सोर्स होना चाहिए, आयरन का एक सोर्स होना चाहिए, विटामिन बी का होना चाहिए, विटामिन ए का और कैल्शियम का, और नमक हमेशा डबल फोर्टिफाइड ही खाना है। So this is the dietary diversity, and there are the studies which have proven that there is a positive impact if the ladies consume dietary diversity wali thali in the daily routine, then definitely there is a beneficial for their health. Next slide please. Now second factors that affects the maternal mortality, that is the unsafe hygienic practices. ठीक है, there is a frequent infection we can see in the ladies because she has involved in multiple tasking job, और बार बार हाथ धोना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है कई बार, but it is recommended that ने अपने शरीर की साफ सफाई रखनी है, अपने दांतों की, बालों की, अपने पैरों की, नाखूनों की, सारी सब चीज की साफ सफाई रखनी है, और अपने हाथों को बार बार धोना है। जो भी वो काम करें उससे पहले they should wash their hands, otherwise somehow the infection will go in their body and they are going to be affected. Or pregnancy, especially pregnancy is a period where there is a chances of the more frequent infection again and again. So it is very important कि हम साफ पानी पिएं, हम टॉयलेट्स यूज करने के बाद अपने हाथ धोएं, अपने शरीर की स्वच्छता रखें, और पर्सनल हाइजीन का बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान रखें। अगर आपके घर में कोई एनिमल है तो उसकी आप जब भी हैंडलिंग कर रहे हैं उसके बाद भी आपको हाथ धोने हैं, अदरवाइज द इन्फेक्शन चांसेस वुड बी हायर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिजिकल एक्टिविटी, ये तो मेरे से ज्यादा आपको पता होगा फिजिकल एक्टिविटी। सो you are girls, I would say if the girls are listening, you are at the right place. The physical activity, especially the yoga, it is going to be very beneficial for you because it helps in all the diseases. आप कोई भी बीमारी उठा के देख लीजिए, उसमें योगा का एंड फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। आई वुड से जितना डाइटरी का है उतना ही फिजिकल एक्टिविटी का है। सो in pregnancy you should do these light valley exercise which is on the daily basis, but the hard exercise and which not good for your stomach or for your fetus, that should be avoided. But definitely there is a benefit of the physical activity on your daily diet, and I would say ki you are at the right place, you are the master in it, and you should carry on this. Next slide please. अब हमारे कुछ मिथ होते हैं, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ये मैंने कुछ टिक मार्क लगाए हुए हैं कि घी, लोग बोलते हैं गर्भावस्था में घी नहीं खाना चाहिए, इससे वजन बढ़ जाएगा। खाना चाहिए बट लिमिटेड
मात्रा में खाना चाहिए. कोकोनट वाटर भी ले सकते हो. राइप पपाया भी खाना चाहिए. The people says it may cause to the abortion. No, it won't. It's a very rich in carotenoid, vitamin A का sources है, so we should consume. But raw papita, it is somehow it is digestion में problem, किसी किसी को gastric problem कर देता है. So if there is a gastric problem, you can avoid it. And definitely yoga and the walking is the very good positive signs during the pregnancy. Green chili से भी आपको sometimes अंदर जलन हो जाती है, gastric problem हो जाती है. If you are facing these problems, you should avoid it. And otherwise, you should eat everything. Otherwise, if it is not harming your body, you should eat everything. There is no myth as such कि during pregnancy we should not consume particular food item. But in our rural area, they have the myths कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारी problems ladies को हो जाती है. Next slide, please. Restrict caffeine intake, avoid alcohol, tobacco and other additive substances. So ये तो आजकल की डिमांड है. The people eats a lot. चाय के बिना उनकी जिंदगी नहीं चलती है, कॉफी के बिना उनको मॉर्निंग नहीं होती है. And our young generation, especially the adolescent phase, our बच्चास, they are totally mostly dependent on the cold drinks. But all these are the not safe for your health. If you can avoid, you definitely should avoid all these. जिस पे क्रॉस लगा है वो तो खाने ही नहीं है आपको. But tea and coffee, if you are very very addicted कि मेरे को उसके बिना चल नहीं सकता है, then you should not go beyond the 2 cups of coffee and not more than 2 cups of the tea. One morning, one evening, wherever you want to have, please have, but not more than 2. Because these are the items which are going to be inhibit in your absorption. आप जो भी खाना खाएंगे आपके शरीर में उस खाने को पाचन शक्ति में ये अवरोधक पैदा करेंगे ही करेंगे. So I would recommend not to touch all these cross वाले items, your cold drinks, alcohol, pan and tobacco. And tea and coffee, I would say not to have. But if you are addicted, you can't live without it, then I won't recommend more than 2 cups of these coffee and the tea. Because definitely these are also one of the factors कि हमारी immunity power को lower करते हैं, and we are more towards to the बीमारियां, more towards to the harmful diseases. Next slide, please. So from all above slides, it's my common message. Number 1, maintain your personal hygiene, wash your hands before and after using the toilets, and keep yourself safe. Light exercise is very, very important. Keep going on with your yoga and the walking. Sleep properly during pregnancy, and avoid all these coffee, caffeine, cold drink, tobacco, everything which you can avoid. Good to avoid it. Consult your doctor is very important. What the ladies does, they don't go consult with their doctors, अपना ही घरेलू उपचार करती रहती हैं, जिसकी वजह से और side effects हो जाते हैं. So we should avoid it. We should consult with your doctor. And the last thing is, do not lift up your heavy loads. कुछ भी ऐसा भारी काम नहीं करना है जिससे कि आपको problem हो जाए. So these are my common messages for the pregnant ladies. Next slide, please. Now, एक पड़ाव के बाद अभी दूसरा है lactation. So lactation is also very crucial period, but it is also very more crucial to the, because now she have to fulfill her requirement. She has to feed the baby as well. So basically what we have observed, the study, what have they shown कि after the pregnancy, during lactation phase, the ladies have their muscle mass problem, ladies have their backbone pain, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, because of there is a calcium, lack of calcium. बहुत सारा कैल्शियम हमारी बॉडी में चाहिए होता है. आप ये लैक्टेशन के टाइम में जब माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हमें कैल्शियम लेना चाहिए. बट देयर आर सम लेडीज हु कैन नॉट ड्रिंक ऑन द डेली बेसिस. उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो डेली जाएं और दूध पिएं, भरपूर मात्रा में दूध पिएं, 4 एक्सचेंजेस दूध पिएं, 4 ग्लास दूध पिएं, नहीं है.
तो उसके लिए हम उनको बोलते हैं कि आप अंकुरित दालें खाइए, होल सीरियल पल्स खाइए, दे आर वेरी वेरी रिच इन द कैल्शियम सोर्सेज। रागी खाइए, मुफ्त में आपका कड़ी पत्ते का पेड़ ये लगाइए, इसमें इतने सारे इतना रिच कैल्शियम होता है। आप कड़ी पत्ता खाइए, हरे पत्तेदार सब्जी खाइए, अगर दूध अफोर्ड कर सकते हैं तो दूध भी खाइए। दे आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ द कैल्शियम, और ये खाने ही खाने हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन टाइम। बट side by side, when she has to feed her baby, the galactogox foods are also very beneficial. So galactogox foods are the foods which helps in the production of the milk, good quality of the milk. So ज्यादा से ज्यादा माता का दूध अगर बच्चे को पिलाना है तो गैलेक्टोगोगस फूड खिलाने हैं, and they are also very rich in calcium. Like हमारा घरेलू उपचार जो हम करते हैं, आप योग में भी करते होंगे, ये सब की घरेलू हमारे जितने भी ट्रेडिशनल हैबिट्स हैं, they are very good, जो हमारे दादा परदादा के टाइम से चली आ रही हैं, they are very good. But in modernization we are going, you know, more further. We are not adopting the traditional practices, but I would recommend go with your traditional practices. और जो घर में हमारे जो ये लड्डू वगैरह बनते हैं ज्वाइन के, जीरे के और आपके सौंफ और ये जितनी गोंद वगैरह डाल के गर्भावस्था इसमें लैक्टेशन में दी जाती है, सौंठ अजवाइन के लड्डू, ये प्लीज ये रिकमेंड करिए, बिकॉज दे आर वेरी वेरी न्यूट्रिशियस, दे आर रिच इन द कैल्शियम, दे आर रिच इन द गैलेक्टोगोगस, एंड दे आर गोइंग टू हेल्प अ लैक्टेटिंग मदर to build up her tissues back, which has been, you suffered during the delivery time. So it is very important कि हम lactation mothers को बोलें कि आपको कैल्शियम रिच सोर्सेज पे ध्यान देना है और साथ के साथ गैलेक्टोगोगस फूड को भी खाना है, जिससे कि वो अपना भी ध्यान रखे और अपने बच्चे का भी ध्यान रखे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now there are many risk factors that affects on the woman's health, but I have covered few of them because of the time constraint. So number one is the anemia, second is the high blood pressure, third is diabetes, fourth is urinary tract infection, next is आपका overweight and obesity, and the underweight. So these are the health issues these days. It's very prevalent, very high in the Indian scenario. Next slide please. So next, in a previous slide, please. So anemia is quite common globally, as I just told you the previous slides. It's a very, very, very important point of the matter of concern. Government is also worried about the anemia, how this can be cured on the larger level, because globally this problem is increasing day by day, and WHO estimates that 42% of the children less than 5 years, सोचिए कितने छोटे बच्चे, they are also affected with the anemia problem, and 40% of the women worldwide, they are anemic. So more than approximately 50% of the worldwide women, they are anemic, and it's a very I would say कि बहुत ही दुख की बात है कि हमारे पास in India we have such a traditional practices, इतने अच्छे अच्छे हमारे पास sources है, उसके बावजूद भी आप ये डेटा देखिए WHO का, इंडिया का, it says in 2015 50% the ladies were anemic, 16 का आप डेटा देखिए 50.4% अगेन anemic, 17 का देखिए डेटा आप 50% अगेन anemic, 18 का डेटा देखिए अगेन 50.2% anemic, 19 का डेटा देखिए इसे 15.1. hardly we can see any change, hardly we can see, while the government is running so many programs, they are distributing IFS tablet, they are promoting each and every component in terms of the anemia to combat the anemia. anemia मुक्त भारत भी उन्होंने चलाया, सब कुछ एफर्ट करने के बाद still we are not overcoming with this problem anemia. So it's a very serious matter, especially for the women, and this is the main reason जिसकी वजह से वो उनको डेथ का शिकार होना पड़ता है, उनकी मृत्यु हो जाती है. So हमें इस पे बारे में बहुत बारीकी से सोचना चाहिए. Next slide please. Now I would tell कि what are the reasons of this anemia. ठीक है, क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है लोगों में. Insufficient dietary intake of iron rich foods and the iron enhancer. तो अगर हम पर्याप्त मात्रा में लोह तत्व वाले खाना नहीं खाएंगे या फिर एनहांसर नहीं खाएंगे, एनहांसर मीन्स which helps in the absorption of the iron, जैसे कि है विटामिन सी. अगर हम विटामिन सी नहीं खाएंगे आयरन के साथ,
तो डेफिनेटली एनीमिया होगा ही होगा। सेकेंड इज एक्सेसिव डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन इनहिबिटर। इनहिबिटर भी मैंने आपको बताया जो कि अवरोधक पैदा करते हैं एब्जॉर्प्शन में, जैसे कि चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, टबैको, ये सारे इनहिबिटर्स हैं, ये हमें नहीं खाने हैं। सो अगर आप इसके शिकार हैं, अगर आप ये चीजें खाते हैं, तो अगेन यू आर मोर प्रोन टू द anemic conditions. Excess loss of the blood through an injury or during menstruations, less iron store in the body, शरीर में आपके अगर लोह तत्व जमा नहीं है, स्टोर हाउस में नहीं है, then also you may lead to the anemia. Increase iron requirement during adolescence and pregnancy, but if we don't consume iron resources on the daily basis, then again we are more prone to this particular bimari. Iron loss due to the infections, parasites, and the intestinal worms, poor environmental sanitation and unsafe drinking water. अगर हम ये सब बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो हमारे शरीर में अवशोषण की नहीं हो पाएगा, हमारे सारे पोषक तत्व हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे. Folic acid deficiency, so iron is not a single deficiency of iron, it's a deficiency of the folic acid and the vitamin B12 also. So हमें vitamin B12 भी खाना है, folic acid भी खाना है, लोह तत्व भी खाना है और vitamin C भी खाना है, तभी हम इसे एनीमिया को जड़ से भगा सकते हैं. Increase the blood volume causing the hemoglobin dilution during pregnancy. So pregnancy के दौरान अगर आयरन की मात्रा बढ़ती है और हम नहीं खा पाते हैं, then definitely we are going to towards the anemia की problem. Next slide please. So prevention के लिए मैंने आपको बताया, the government has also running a program anemia mukt bharat. They have their own test, treat and talk. They also supply the supplementation. It is available on their dashboard also. So they have some their own protocols how they are combat the anemia. But through dietary sources, they are the consume a variety of the food that consists of cereal, pulse combinations, vegetables, fruits, nuts, milk. If they are, you are non-vegetarian, then the flesh food also can have. For better iron absorption, मैंने बताया vitamin C लीजिए, double fortified नमक खाइए, हाइजीन एंड सैनिटेशन का थोड़ा ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, क्या कुकिंग मेथड आप यूज कर रहे हैं. समटाइम्स आवर फॉल्टी कुकिंग मेथड आल्सो डिस्ट्रॉय आवर न्यूट्रिएंट्स. तो किस तरीके की हम कुकिंग मेथड यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एल्बेंडोजोल टैबलेट्स शुड बी रिकमेंडेड बट विद रिकमेंडेशंस. Maintain your personal hygiene and improve your sanitation facility. These are the prevention of the anemia. अगर आप इन सबको फॉलो करेंगे, definitely we can overcome with this problem. Next slide please. So in simple pictorial form I have tried to explain you क्या करना है क्या नहीं करना है. So IFA tablet खानी है, नींबू के साथ लेनी है, नींबू पानी के साथ, ऑरेंज वाटर के साथ, लेमन वाटर के साथ, जिसके साथ आपको लेना है, लेकिन विटामिन रिच सोर्सेज होना चाहिए. हरे पत्तेदार सब्जी खानी है, मांस मछली खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, सिट्रस फ्रूट्स खाइए एंड स्प्राउटेड दाल डेली खानी है. इफ यू डोंट कंज्यूम द स्प्राउटेड दाल बिकॉज जर्मिनेशन एंड द फर्मेंटेशन, these are the two methods which enhances the vitamin B complexes. और vitamin B complexes की अगर कमी है और आयरन आप पूरा खा रहे हो तो भी आपको एनीमिया हो सकता है. सो स्प्राउट्स हमें डेली हमें अपने आहार में खाना चाहिए. क्या नहीं खानी है हमें, चाय कॉफी मैंने आपको बता दिया. IFA टैबलेट्स प्लस कैल्शियम. तो अगर हम लोह तत्व की गोली सप्लीमेंट्स खा रहे हैं लेकिन वो दूध के साथ हमें नहीं लेनी है, हमें किसके साथ लेनी है, नींबू पानी के साथ लेनी है, ऑरेंज के साथ लेनी है, क्योंकि कैल्शियम और आयरन को आप एक साथ में नहीं खा सकते हैं. ये एक दूसरे के पोषण में, एब्जॉर्प्शन में अवरोधक पैदा करते हैं. तो अगर आप सप्लीमेंट्स खा रहे हैं तो प्लीज आप नींबू पानी के साथ लीजिए, आप दूध के साथ तो बिल्कुल नहीं लेंगे. एंड द थर्ड थिंग इज प्लीज प्रिस्क्राइब योर डॉक्टर, टेक द consultancy of your doctor. If you are feeling any sign and symptoms of anemia, definitely you should go for the doctor for the more prescriptions. Next slide please. Next slide please. So dietary advice, green. Okay, high blood pressure. This is the another problem
इन लेडीज हाई ब्लड प्रेशर की बहुत शिकायतें होती हैं. अगेन योगा इज द मंत्रा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ, so high blood pressure is also quite common in the ladies, and again the yoga is the mantra. योगा करना चाहिए, उससे हमारे रक्तचाप में मदद मिलती है. योगा हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए. प्रीवियस स्लाइड. हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट शुड बी कंज्यूम एंड द कैल्शियम टैबलेट्स. These are the 4 things we should do for the high blood pressure. अगर प्रॉब्लम है, क्या चीज नहीं करनी चाहिए? समोसा पकौड़ा जंक फूड नहीं खाने चाहिए. अननेसेसरी पिकल्स नहीं खाने चाहिए, स्पेशली इफ देयर इज टू मच ऑफ ऑयल इन इट. वी शुड अवॉइड इट. एंड ऊपर से नमक डालना, बहुत लोगों को होता है टेबल सॉल्ट की, अपनी खाने की टेबल पे आप नमक रखते हैं, प्लीज नमक हटा दीजिए वहां से. ऊपर से नमक डालना बहुत ही हार्मफुल है. ट्राई टू अवॉइड द नमक to add in your diet as much as you can. जितना आप नमक डालेंगे उतना आपका सोडियम कंटेंट हाई होगा. And third thing is, and the last important, do not stress. स्ट्रेस नहीं लेना है, अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना है. सो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए, सिंपली लाइफ जिए, जो नेचुरल लाइफ है उसके साथ आप प्लीज सर्वाइव किए, आर्टिफिशियल लाइफ पे नहीं जाइए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एक मिस हो गई शायद. प्रीवियस स्लाइड. हाँ जी, क्या क्या करना है आपको? अपना हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो क्या करना चाहिए? कंट्रोल योर ब्लड शुगर एंड द लिपिड लेवल. टेक योर मेडिटेशंस एज प्रिस्क्राइब. रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट इन योर डाइट, कम से कम नमक खाना है. रिप्लेस योर सॉल्ट विद द स्पाइसेस. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आप कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें आप नमक अवॉइड ही कर दें और नमक का सब्स्टिट्यूट आप अपने स्पाइसेस जो हमारे मसाले हैं उनसे अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि नमक को पूरा अवॉइड किया जाए. स्पेशली जो ऊपर से नमक डालते हैं, दैट इज वेरी 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 हार्मफुल. ईट होल ग्रेन सीरियल्स एज मच एज पॉसिबल. दे आर वेरी रिच इन द फाइबर एंड इट हेल्प्स टू इनबिल्ट योर कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर. Eat potassium rich fruits and the vegetables as a sweet lime, peaches, tomatoes, spinach, amaranth leaves. Choose your low fat dairy products. फुल क्रीम मिल्क नहीं लेना है, बहुत हाईली फैट फूड नहीं खाना है. लीन मीट अगर खा रहे हो तो आप उसमें चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, एग का वाइट पोर्शन खा सकते हैं. और हेल्दी ऑयल्स आपको यूज करने हैं, जैसे कि सेसमे ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया. सबसे अच्छा होता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, जो कि आजकल लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, बट इट्स वेरी रियली वेरी गुड. एंड द राइस ब्रान ऑयल एज वेल. रीड द फूड लेबल फॉर द सोडियम कंटेंट. आप कोई भी पैकेट की चीज खरीद रहे हैं, आप देखिए उसमें सोडियम कितना है. मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली. कीप अपना जो वेस्ट है सरकमफ्रेंस उसको नापते रहिए. रिड्यूस योर वेट इफ यू आर ओवर वेट. Drink lots of water, and because it helps to control your blood pressure. To regular physical activity and the brisk walking is important. Yoga, meditation, and the stress-free management. These are the mantras of the high blood pressure. Next slide, please. ना इम्पॉर्टेंट इज डायबिटीज. आजकल डायबिटीज हर किसी को हो रहा है, जिसको भी देखो उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है. इसके लिए वी हैव ऑल्सो more further, we have left behind the developed countries also. So it is very very matter of concern also कि डायबिटीज अगर किसी को है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है. क्योर तो मैं नहीं कहूँगी किया जा सकता, बट yes definitely you can control it. So for diabetic patient, try to consume maximum fluid as much as, but not don't add the sugar in it. अगर आप लस्सी पियेंगे तो मैं नहीं बोलूंगी वो फ्लूइड है. Try to avoid the sugary items. होल ग्रेन एंड द पल्सेस. आप देखेंगे होल ग्रेन एंड पल्सेस, दे हैव गुड फाइबर्स और हर बीमारी में दे हेल्प्स. दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ द कैल्शियम, दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ द आयरन, दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ फाइबर. सो ट्राई टू हैव द होल ग्रेन्स एंड द पल्सेस इन योर डाइट. सैलेड आप खाइए डेली एंड द brisk वॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स. क्या नहीं करना है हमें? लोग क्या करते हैं, वजन घटाने के लिए भूखा रहना स्टार्ट कर देते हैं, फास्टिंग कर देते हैं. तो फास्टिंग नहीं करनी है, उससे आपका ब्लड शुगर, आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत अप डाउन हो जाएगा. सो डोंट फास्ट, डोंट ओवर ईटिंग कि अननेसेसरी तुम खाते रहो
You have to keep your meal in a balanced mode कि मेरे को limited खाना है, बार बार खा सकता हूँ, but limited खाना है, पर मेरे को healthy चीज ही खानी है. Sweets तो आपको खानी नहीं है. Try to avoid the tea and coffee with sugar. If you can't control, then have without sugar, but definitely sugar के साथ तो आपको नहीं खानी है. Next slide please. So dietary follow-up with the registered dietitian at the regular intervals. Monitor your blood sugar level regularly. Do regular physical activity like yoga and the walking. Take your meditations and medicines on time. आप अपना चेकअप कराते रहिए. Inspect your feet daily for cons and the ulcers की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पैरों में, नहीं तो पैर थोड़े फटे फटे से और अल्सर हो जाता है उनमें. क्या नहीं करना है आपको, कोई भी मैदे से बनी चीजें नहीं खानी है, जिसमें फाइबर ना हो ऐसी चीजें आपको नहीं खानी है. मैदा और मैदे की चीजें नहीं खानी है. फूड सच एज स्वीट्स, स्वीटनर, बेवरेजेस, पेस्ट्रीज, ये सब चीजें नहीं खानी है. हाईली स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, अरबी हो गई, जिमीकंद हो गया आपका, चीकू, बनाना, शरीफा, लीची, ग्रेप्स, इस तरीके की हाईली स्टार्ची फूड्स एंड वेजिटेबल्स एंड दी शुड बी अवॉइडेड. मीलों को स्किप करना नहीं है आपको, बार बार थोड़ा थोड़ा बार बार खाते रहना है. स्नैकिंग और निबलिंग अनहेल्दी फूड्स इन बिटवीन दी मील्स की कोई नहीं है. चिप्स खा लो, बर्गर खा लो, एक समोसा ही तो है, एक पकौड़ा ही तो है, ऐसी चीजें आपको नहीं खानी है. फास्टिंग और फीस्टिंग नॉट अलाउड. बहुत ज्यादा कम खाना, बहुत ज्यादा खाना नॉट अलाउड. टोबैको एंड अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड. सो बेनिफिशियल एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए हमें? So activities like the walking, using the stairs, moving around throughout the day. थोड़ी देर बैठिए, फिर थोड़ा चल के आइए, फिर बैठिए, फिर चल के आइए. Keep body and joint flexible. Up and down करते रहिए, अपनी बॉडी को मूव करते रहिए. Helps lower blood sugar, blood pressure and the cholesterol. Lower risk of the pre-diabetes and the heart disease. Avoid excessive exercise, especially if the patient is on insulin. बहुत ज़्यादा डायबिटीज है तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी ठीक नहीं है. अपने स्ट्रेस को थोड़ा दूर करिए, अपना ब्लड रेगुलेशन को कंट्रोल में रखिए. एंड स्ट्रेंथन हार्ट मसल्स एंड द बोन्स. दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द डायबिटीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Now urinary tract infection, this is quite common in our girls and the ladies की UTI infection बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे बचने के लिए बहुत सारा पानी पीना है. Keep yourself hydrated again and again. ये नहीं पानी पीना है, कोई भी फ्लूइड यू कैन हैव इट. एंड दी ट्राई टू बिल्ड अप योर इम्यूनिटी पावर. विटामिन सी सोर्सेज खाने हैं, स्प्राउट्स खाने हैं, खट्टे फल खाने हैं, जिससे कि आंवला खाना है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्टअप हो और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको बार बार नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ हाइजीन एंड सैनिटेशन is also quite common in these ladies, all the ladies. So because especially in the poor countries, अगर आप रूरल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था बहुत कम है. So there is a inequality and the discriminatory social norms. Cultural taboos are there, गरीबी is there, and the lack of basic needy services like toilets. Ladies को टॉयलेट जाने के लिए बहुत लंबा सफर करना पड़ता है, उसके बाद वो टॉयलेट जा पाती हैं, जिसकी वजह से उनकी हाइजीन एंड सैनिटेशन की कंडीशन अफेक्ट होती है. और menstrual health and the hygiene also affects, especially during the adolescence and the pregnancy. So it's a important thing कि we should maintain, we should think about it, and the toilets, it's a basic services, it should be given to these girls. Next slide please. This is the another problem in the developed areas, that the ladies are overweight and the obesity is there. So that is also quite, prevalence is quite high in these days. तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? Again, I would recommend green leafy vegetables, whole pulses, especially bajra, millets, ragi, fat-free milk, and the liquid should be consumed by these ladies if the ladies are the overweight. And if they are hungry in between, then ankur chaat can be given. Vegetable sivaiya, जिसमें कि आलू नहीं होना चाहिए, vegetable sivaiya with less oil, and dalia or the pulav can be recommended. And the for calcium rich, the charge or the plain charge can be recommended. क्या चीज नहीं खानी है? So again, chips, fried, junk food, samosas, pakoda should not be consumed. Highly energetic, beverages should not be given. बहुत स्वीटरी आइटम्स, बेकरी आइटम शुड बी अवॉइडेड. बिस्किट, केक नहीं खाने हैं. और आपका रिफाइंड फ्लावर विच हैज नो फाइबर इन इट,
like pizza, burger should be avoided. और अपना blood pressure and blood sugar level regular check कराना है. Next slide please. So if the patient or the ladies are obese, then small meals would be recommended कि थोड़ा थोड़ा करके खाइए, because उनको फिर से बार बार भूख लग जाती है कि भूख लगी है. So it's better to give them the small meals. थोड़ी थोड़ी मील करके दीजिए और पहले से सोच के रखें कि अगर मुझे भूख लगी तो मुझे क्या खाना है. Don't choose instant, otherwise you will pick the wrong faulty practices कि कुछ नहीं, अभी भूख लगी है तो मैं चिप्स खा लेती हूँ, अभी मैं समोसा खा लेती हूँ, अभी मैं कुछ ऐसी चीज खा लेती हूँ जो इंस्टेंट मुझे मिल जाए. तो you should have something in your mind, if I'm hungry I have to eat it, and the portion size should be small. Eat slowly and chew properly. जितना आप चबा के खाएंगे उतना आपके बॉडी को टाइम लगेगा उसको कि मेरे पेट भरने का आपको सिग्नल मिल जाएगा जल्दी. आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो आप ज्यादा खाते हैं. So it's better eat slowly and chew properly. It will digest easily in your body as well. Try to have the highly fiber rich foods like the whole grains, pulses, bajra, ragi, चने का आटा खाइए, आप मूंग की दाल खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, एंड द फ्रूट्स एंड जूसेस, अगर हो सके अवॉइड द जूसेस एंड हैव द होल फ्रूट पूरा, क्योंकि दे आर वेरी रिच इन फाइबर. अगर आप जूस पियेंगे तो उसमें फाइबर कंटेंट निकल जाता है. ईट हेल्दी स्नैक्स सच एज द इडली, मुरमुरा, चाट, उत्तपम etc. Choose the low fat milk. Use healthy oils like mustard oils and rice bran oil, sesame oil. क्या नहीं करना है, मिल्क स्किप नहीं करना है, अननेसेसरी का फैट नहीं लेना है, घी नहीं लेना है, बटर नहीं लेना है, वनस्पति ऑयल नहीं लेना है. ब्रेड, केक्स एंड बिस्किट शुड बी अवॉइडेड. हाईली फैट, हाई शुगर वाले आइटम शुड बी अवॉइडेड. अल्कोहल शुड जिससे कि आपका दिमाग एनर्जी एंड